Hello, good afternoon to all of you. The topic of our study is the solid state chemistry. In the today's online discussions, we have covered some basic part of the solid state chemistry. In that basic part, we have covered the basic terms, that is cubic crystal, types of cubic crystals. Okay, distance, area occupied by, number of units are present. All the parameters we have studied in the today's online discussions. So let's start the onward points of the solid state chemistry. In this part, firstly we have to study the crystallography. What is the crystallography? The crystals is a solid substance having the definite geometrical shape with the flat faces and the shape edges. The solid state is a branch of the science which deals with the geometry, properties, structure of the crystals as a crystalline substances. Next is the laws of the crystallographies. There are three laws of the crystallography, that is plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. The plane of symmetry, it is an imaginary plane passing through the crystals, divided into two parts, such as one part is the exactly mirror images of the other parts. Next is the axis of symmetry. It is an imaginary line about which the crystal is repeated, so that the crystal present having the same appearance with more than the one the rotations. Next is the center of the symmetries. It is an imaginary points in the crystal such that any lines drawn through it will intercept the surface of the crystals at equal distance in opposite directions. Next is the law of rotational indices. All the faces cut at origin exist at the distance from the origins, which bear a simple ratio to the one another. Here are some conversions are given here. That is the these indices converted into reciprocal indices, converted into multiplication by LCM, then the Miller indices and planes. This is the conversion of the these indices into the plane, how it is converted step by step. When we will take the one example, that is 1:2, 1:2, 1 is the these indices reciprocal. Once reciprocal, always 1. Multiplication by LCM, LCM is also 1. Miller indices 1 and plane 1. Now 2, 2, 2 these indices is here. Reciprocal is always 1/2, 1/2, 1/2. Next is the multiplication by LCM. LCM is the 2, 2, 2, 2. The Miller indices 1:1, 1:1 and the plane. In this phase, total indices are given here. हम इस वीडियो में मिलर इंडाइसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस मिलर इंडाइसेस कैन बी स्टडीड बाय डिफरेंट वेज. क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम मिलर इंडिसेस के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग किसी क्रिस्टल या लैटिस के किसी प्लेन या किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में किया जाता है. अगर आपने मिलर इंडिसेस के बारे में पहले कभी पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मिलर इंडिसेस को HKL से डिनोट किया जाता है. लेकिन HKL किस ब्रैकेट में लिखा है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मिलर इंडिसेस को लिखने के लिए 4 तरह के ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट का यूज़ 4 डिफरेंट कंडीशंस में किया जाता है. इसके साथ ही एक क्रिस्टल लैटिस ऐसा भी है जिसके लिए 3 इंडिसेस HKL के अलावा 4th इंडिसेस I की भी ज़रूरत होती है. इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. मिलर इंडिसेस का उपयोग 2 डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है. फर्स्ट, एक ही लैटिस के सभी लैटिस पॉइंट ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं. ऐसे में ओरिजिन से या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी लैटिस पॉइंट की डायरेक्शन को बताने के लिए मिलर इंडिसेस का उपयोग किया जाता है. सेकंड है, एक लैटिस कई सारे प्लेन से मिलकर बना होता है. ये सभी प्लेन अलग अलग ओरिएंटेशंस में होते हैं. ऐसे में लैटिस या क्रिस्टल के प्लेन्स के ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए मिलर इंडिसेस का उपयोग किया जाता है. किसी लैटिस या क्रिस्टल की डायरेक्शन या प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने इंडिसेस की ज़रूरत होगी,
यह उस लैटिस या क्रिस्टल के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, 1 डायमेंशनल लैटिस के लिए 1 इंडेक्स, 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए 2 इंडेक्सेस और 3 डायमेंशनल लैटिस के लिए 3 इंडिसेस की ज़रूरत होती है। जाता है जब हम किसी लैटिस पॉइंट के डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस लिखते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। वहीं अगर हम प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखते हैं तो उसे राउंड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात, तो इन दिस वे हमने जो है मिलर इंडाइसिस एक्चुअल में होता क्या है वो देखा है। अब मिलर इंडाइसिस का मैक्सिमम यूज़ होता है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उस पे बेसिस पे कि आपको जो है 3D डायग्राम ड्रॉ की वाली रहती है वेरियस एक्सिस में और आपको उसका मिलर इंडाइसिस बताना होता है, या कहीं पे मिलर इंडाइसिस देता है आपको प्लेन बनाने होते हैं, तो वो कैसा बनाना है उसके लिए इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। Denote planes, and bracket notation denotes direction. So for the technique in finding out what the plane looks like for drawing planes, all you do is take the reciprocal of each of the coordinates, since when you draw a plane they have to be in integer notation, so you usually have a fraction when drawing it in a unit cell. So that's why the reciprocal for 1, 2, 4 would be 1, 1/2, 1/4. And then all you do is make sure you plot the plane properly. So the 1 is in the A direction, so we go to the 1. We go 1 along A, then we go halfway along B across the unit cell, and then we go up to a quarter on C, so a fourth of the way up is about there. And then you connect dots and you got your plane. So cool. Looks like a pool, I guess. The axis, and then we don't move anywhere in C, so it's just like we move down in that direction. But how do we transfer that information into the unit cell? Well, it's simply you simply shift it into your current coordinate system, so it would look something like that. So that's one way to look at these Miller indices, is to expand your coordinate system and look at, instead of just the small one local coordinate system, look at local coordinate systems adjacent to your unit cell. Cool. So now we got another plane problem, so simply take the reciprocal. The reciprocal of 0 mathematically is technically infinity, and we'll talk about what that means in a minute. Reciprocal of 1 is 1, reciprocal of 2 is 1/2. So the 1 there, I should explain what the infinity is. I wrote it somewhere, but it's not popping up. So the infinity pretty much means parallel to whichever axis the infinity is located. So in this case, we need to be parallel to A. So we'll show you how to draw that in a minute. But notice, let's look at what we do know. So 1 along the B axis. So we hit the B axis at 1, and we go halfway up on C, right? But we have to be parallel to A. So in order to be parallel to A, we have to draw our plane as such, and that's why the infinity means parallel to the whichever axis. Cool. So notice how that part of the plane is always parallel to the A axis and it will never intersect it. Cool. Alright, now let's look at part B, where we have to give the Miller indices from the planes or directions shown. So let's look at the plane over here. Let's look at the intercepts there. So that looks like to be halfway at A. If you just look at the unit cell, it looks like halfway in every direction on each axis. So we got A over 2 here, we got B over 2 there, and C over 2. Halfway along up each axis. So simply how we would start off our Miller indice for indicating the plane is, well, 1/2, 1/2, 1/2, right? Went halfway in each direction. But we know that planes for Miller indices cannot be, or must be, in integer notation. So simply what we do is we take the reciprocal, and doing that will give 2, 2, 2. Awesome. इन दिस वे जो रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स है 5th एंड 6th को हम जो इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह से इसके मिलर इंडाइसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो सेम मेथड हम यूज़ करेंगे मिलर इंडाइसेस को फाइंड आउट करने के लिए।